on the notebook. It will be better for me Huh. and I don't both enjoy are. rewriting on the book itself. That's why I suggested you the notebook first. एक अलग से Okay. डायरी नहीं तो notebook ले लो, whatever is comfortable for you. But keep it only for vocabulary. Okay? Don't use it for anything else. Okay. I usually don't like writing anything on my books. So that's the reason I told you. But some people are okay Yeah, with writing. it's a So good idea. I will do same. okay. Good evening, guys. Good evening, ma'am. Good evening. दिव्या Do हो you गया have, एग्रीमेंट का काम? Divya, am I audible? Guys, turn on your cameras quickly. Am I आदित्य वो जो audible, मैंने ma'am? लिंक यस नाउ यूर ऑडिबल. Okay. आदित्य मैंने जो आपको लिंक सेंड किया है ना वो अपने क्लास के टाइम की पे ही होते हैं उनके भी क्लासेस. ओके सो okay. इट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस टू अटेंड बट आई कैन शेयर द ग्रुप लिंक विथ यू आल्सो. I can ask and share the group link. But it's Uh, from 8 to 9. Again, same our class timing. oh, उनका डेली होता है बट इवन आई मिस आउट बिकॉज ऑफ आवर सेशंस. I thought कि another link होंगे for me. That's why. ओके नो प्रॉब्लम. Okay, guys, how are you doing? Good, good, ma'am. How are Okay, you, ma'am? I am also good. I don't know, I'm very sleepy today. Okay. I don't know why. Maybe How was just the reading because. session, book session? We didn't start reading the book, we just selected a book today. So we will start Okay. reading now. Okay, so हमने Okay. mutually decide किया कि कौन सा book पढ़ना है, depending on the Acha. people who were present in the meeting, of course. There were only three people, and after that, also one of them dropped out. Then we two were only there. Aditya was there, and one more student of mine, Yaman, was there. Okay. So we have decided to read The Hidden Hindu. Okay. It is a little bit of science fiction, little bit of mythology, little bit of fantasy, we can say. Mm-hmm. It's actually odd to call Ramayana Mahabharat mythology because it is Mm-hmm. our history, it's not mythology. But Okay. some people don't know, some people don't agree with that. That's why they call it mythology. So I'm saying the same thing, but Okay. it's actually our history. So yes. So Okay. we have decided to read that and along with that contingency camera on. Along with that, we would be like, we as English students, what we would be doing is we would be trying to highlight the vocabulary that we come across during the reading sessions. Okay, read Okay. खुद से ही करेंगे अभी के लिए तो. Let's see how it Hmm. works out. ठीक है. And at the Okay. end, we would meet for the discussion of हमने कितना Okay. रीड किया है और कितना एंजॉय किया और उसमें क्या एलिमेंट्स हमें पसंद आए क्या पसंद नहीं आए एवरीथिंग. ओके एंड इफ Okay. वी फील कि नहीं हमसे रीड नहीं हो पा रहा देन वी वुड हैव रीडिंग सेशंस एज वेल. But again, reading sessions would Okay. only be on the weekends. So I don't think it will be very helpful just reading the books weekend to weekend. But let's see. Okay. Ma'am, just a small uh, Hmm. question was there. So while you explaining me, I always face this in office, like Mm-hmm. how TL explains me about the work and all. So every time saying okay, okay is very boring. So can you suggest me something? You can always give your affirmation by saying definitely, sure, yes, Okay, okay, sure एक वर्ड हो okay. गया, definitely हो गया. और कौन Uh-huh. से वर्ड्स होते हैं? Okay is I like very accepted. common. Accepted वो भी एक हो गया. Okay. These When are he few is of the something words. giving me a task, so how could I say yes, I accepted or sure is okay, I'll but definitely do I it. You can just say it in one okay, sentence. I will definitely do it. I'm on it. okay, okay, टास्क डेफिनेटली दिया में है ना? मैम मतलब I'm on ऐसा it हो भी हो जाता जाता है. है कि ही और सी पूरा पूरा का पूरा आपसे एक्सपेक्ट मतलब पूरी पूरी डिपेंडेंसी हो जाती है क्रिएट तो उस तरीके का ऑफिस में क्या बोलना सही रहेगा अपने साइड से.
डेफिनेटली, मतलब ऐसा भी वर्क होते डेफिनेटली हैं मतलब कि यू कब मे बी आएगा कि यू आर नॉट एबल टू डू। कुछ चीजों के साथ में एग्री कर रहे हो तो डेफिनेटली बोलो। हाँ। लाइक अगर कोई बोला कि अभी जैसे मैंने बोला while reading the book you should also highlight the vocabulary, so you guys agree with me Right. now, right? तो डेफिनेटली Right. आ Right. जाएगा, मतलब कि हाँ पक्का करेंगे हम, ऐसा हो जाता है Okay. वो डेफिनेटली। Okay. So ओके। every time saying okay is very हाँ, boring. आई Yeah. नो आई So नो it's सो like I'm not interested. I'm very lost or something. करेक्ट, बाय डिफॉल्ट आ जाता है, Right. करेक्ट आ जाता है, हाँ ओके आ हाँ. जाता है, ऑल राइट, राइट। All बहुत right. सारे वर्ड्स है अफर्मेशन के लिए, बहुत सारे वर्ड्स है। ठीक है। Okay. बट अगर आप कोई टास्क ले रहे हो एंड यू आर सेइंग कि हाँ मैं कर लूंगी करके, तो यू कैन से आई एम ऑन इट, मतलब Okay. मैं कर रही हूँ वो काम, या फिर करना स्टार्ट Hmm. कर दूंगी ऐसे, आई एम ऑन इट। Okay. दैट इज ऑल्सो वन मोर वे ऑफ Right. सेइंग। Okay. ओके। Yeah. Thank you. अभी एज अ टीचर यू विल हियर मी सेइंग ओके ओके अलॉट, वो आदत हो गई है। और मेरा सुन सुन के Yeah. कुछ कुछ मेरे टीचर्स भी ओके ओके बोलने लग गए हैं। Right. सो दैट्स द थिंग। Hmm. Yep. How are you guys doing, Kanchanji? Why are you late? Again, you're late today. Again, if I extend my class, then you will be like, ma'am, 9:10 को खत्म कर दो. Ma'am, actually, I was facing some laptop issue actually. So, Okay. and I don't like to join on mobile Uh-huh. because वो रीड नहीं कर पाते तो थोड़ा इतना ये नहीं I know. रहता है। Yes. I think आपका माइक ना गूगल मीट में बाय डिफॉल्ट इसका सिलेक्ट हो जाता है, बैकग्राउंड वाला, तो आपका स्विच करो Correct. हेडफोन, क्योंकि गूगल मीट में आपको स्विच करना पड़ता है। दैट्स सम इशू दैट आई एम हाँ आल्सो करंटली फेसिंग। ओके ओके। हाँ, नाउ यू जूम में स्विच्ड। तो चेंज हो जाता है, इसमें हाँ, करना पड़ता है yes, तो yes. Google Meet थोड़ा में सा करना पड़ता है। That's some issue that I also face every day. But because of the recent mic that I'm using, I switch it usually. ओके ओके। Okay. Abhishek, where were you for the whole week? I haven't seen you in last week. You are on mute. I am in Gulbarga, ma'am, and I was Gulbarga. suffering from some throat infection. Oh, that's bad. How are you now? Yes, I'm feeling better. Feeling better? Okay. Yes, And when are you coming to Pune? next week, on Next week. 25th or 26th. Come on 25th, 26th ko we have our celebration. So I want you guys to give me a head count by tonight. Okay, because we need to make arrangements accordingly. Uh, we have our anniversary celebration next Saturday at 3 p.m. Okay, so Divya has already given me her name. She was the fastest one to give me her name. Okay. So others also please confirm. Of course, you guys can bring your family, your friends along with you. But just give me a head count so I know how to make arrangements for snacks. Okay. कंचन जी आपको भी आना है, पता है आप वाकड़ रहते हो बट आपको भी आना है। आई डेफिनेटली ट्राई मैम या यस यस प्लीज डू कम। या। ओके। खराड़ी साइड ही है क्या मैम? अपना सीजन स्मॉल के पास में, इफ यू नो सीजन स्मॉल। यस। Yeah. So when you come from Seasons Mall towards Kharadi, there is one bridge, Mundwa Bridge, right? So यस before यस। Mundwa Bridge only, it's on the ओके right hand side. ओके मैम Okay. या। अभी तो अपने यहाँ पे बहुत बड़ा जिम भी स्टार्ट हो गया, मल्टी फिट जिम स्टार्ट हो रहा है, मतलब हुआ नहीं है। So ओके it's going to be a very big landmark ओके। now. Okay. Let's start. We're going to start with revision of Unit 1 and then we'll move to Unit 2. Okay. Tell me once my screen is visible. 1 second. Just give me 1 second. हाँ, Ma'am, yes. I don't have the unit one paper. Yes, you Is it might not have it. You can collect it on Monday, not a problem. Okay. Just okay? we would be just revising the grammar parts that you have missed. Okay, don't worry about that. Okay. Just Okay. make notes as much as possible. But of course, the notes are there on the drive also. Ha. From Just on told you the yesterday on the yeah. drive. Now on the drive, the way I had explained you, it will be unit wise, every unit wise. Okay, because एक एक unit में ही इतना सारा study material है, so you shouldn't get confused. इसके लिए मैंने वो unit wise divide किया है. ठीक है? Okay. Yeah.
In the unit 1, we went through the first conversation where David and Beth met each other for the first time and they introduced themselves. Just read the conversation on your own quickly. Done? Done. Okay. Now, after that, we have second conversation. They met each other. Now they talked about Sunny, and then they also introduced themselves to Sunny. Basically, Beth introduced David to Sunny. Okay. Now read this part of the conversation also quickly. Right, Veera. Done? Okay. Now, if you observe, they're talking about each other. Correct? They're talking about each other. The words that they are using are I and you. मतलब वो एक दूसरे से एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं. Correct? They're talking to each Correct. other about each other. So, the part of the conversation that becomes important over here for us to understand is first person and second person. First person क्या होता है and second person क्या होता है? First person is the speaker. Okay, for example, right now I am speaking. So I am the first person over here. So what are the words that I will use? I. मैं pronoun क्या use करूंगी? I. Correct? If I'm referring to singular and if I'm referring to plural, I will use the pronouns we. Correct? We. We are learning. I am speaking. We are learning. Correct? Then comes the second person. That is the listener. For example, you guys are listening to me, so you are the listener. अब सुन रहे हो ना मुझे? So you are the listener. कंचन जी छोड़ के. कंचन जी, make sure there are no disturbances and you pay attention. Okay? Yes. So you are the listener. So I will use the pronoun you. Singular भी रहा तो भी you आएगा, plural भी रहा तो भी you आएगा. करेक्ट. यू ऑल भी बोलते हैं प्लूरल के लिए, बट जो यू ऑल होता है वो थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है. इट्स बेटर टू से यू आर कमिंग राइट, ऐसे. ठीक है. देन आता है इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन ओवर हियर दे आर टॉकिंग टू ईच अदर बट अबाउट सन ही. Correct? So, Sanhi is the third person over here. Now, third person in the conversation is very, very important because जब भी हम third person singular use करते हैं तब हमारे grammar के rules बहुत सारे change होते हैं. Okay? उस वजह से this third person is going to be important for us overall in our course. ठीक है. Now, in third person also there are two types. Singular and plural. Singular मतलब एक जन, plural मतलब अनेक जन. Third person singular is important for us. Now, Sanhi over here is third person singular. एक ही जन के बारे में बात कर रहे हैं. So, she is the third person. Third person is the person that we are talking about. It could be singular, it could be plural. I could say Pritam, Arjun, and Krishan are absent today. So, it becomes third person plural. Okay? And यहाँ पर Sanhi only singular है. So, I will say Sanhi is absent today. Okay? Now, if you observe,
Sanhi is absent today, and when I said Arjun and Preetam are absent today, तो हमारा जो verbs है वो वैसे change होते हैं हर एक tense में. ठीक है? Understood? So that's what our first person, second person, and third person is, which is the first topic in grammar that we have. One second. First topic in grammar that we have, first person, second person, and third person. ये थोड़ा सा हमारे लिए important है because each tense में third person singular में हमारे rules change होते हैं. Okay? फिर आते हैं हमारे types of statements. Now, whenever we make a statement in English, we have a sentence structure that we follow. एक हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है जो हमें फॉलो करना होता है टू मेक अ करेक्ट स्टेटमेंट. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ अस व्हाट वी डू इज वी ट्रांसलेट फ्रॉम आवर नेटिव लैंग्वेज टू इंग्लिश. करेक्ट? वी ट्रांसलेट फ्रॉम आवर नेटिव लैंग्वेज टू इंग्लिश. अभी मुझे सारे लैंग्वेजेस का नहीं पता, बट हिंदी और मराठी में जब भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड देन वर्ब. सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड देन वर्ब. हम कैसे बोलेंगे? मैंने खाना खाया. मैंने खाना खाया. करेक्ट? तो मैंने इज द सब्जेक्ट, खाना इज आवर ऑब्जेक्ट पार्ट, एंड खाया इज माय मेन वर्ब ओवर हियर. Correct? Correct? So it's coming at the end of the sentence. But whenever we make a sentence in English, our sentence structure is subject, verb, and object. Subject, verb, and object. तो उस वजह से जब हम एज इट इज ट्रांसलेट करने का भी ट्राई करते हैं ना, हम उसमें मिस्टेक्स कर लेते हैं. ठीक है? जैसे कि टुडे आई एम नॉट अटेंडिंग. टुडे आई एम नॉट अटेंडिंग, दैट्स इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर. आई एम नॉट अटेंडिंग क्लास टुडे. टुडे हमेशा एंड में आता है. जो टाइम के हमारे एडवर्ब्स रहते हैं वो एंड में आते हैं हमेशा. वो कैसे, वो हम 6th यूनिट में देखेंगे. डोंट वरी अबाउट इट राइट नाउ. ठीक है? जस्ट रिमेंबर द सेंटेंस स्ट्रक्चर, दैट इज आवर सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. अभी ऑफ कोर्स उसके साथ में हमारा जब एडजेक्टिव आता है, उसके साथ में हमारा जब एडवर्ब आता है, उसका प्लेसमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है. ठीक है? मतलब उसके बीच में और चीजें ऐड हो जाती है. बट your sentence should always start with a subject, your verb should follow it, and your object part should be in the last. Verb कभी भी लास्ट में नहीं आएगा. ठीक है? नेक्स्ट आता है नेगेटिव स्टेटमेंट. नेगेटिव स्टेटमेंट इज whenever we use the word not or never in a sentence. जब भी हम सेंटेंस में द वर्ड नॉट या फिर नेवर यूज करते हैं, तो वो हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाता है. ओके? उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हम देखेंगे आगे. डोंट वरी. फिर आता है हमारा इंटरोगेटिव स्टेटमेंट. इंटरोगेटिव स्टेटमेंट इज व्हेनेवर वी आस्क क्वेश्चंस. अभी फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू, वेयर आर यू फ्रॉम दिव्या? दिव्या आंसर. I am from Kerala. Okay. Now hold on to that answer. Okay. Now Kanchan. I'm from Maharashtra. Okay, I'm asking you the question. I was waiting for you to unmute. Are you from Pune? Yes, I'm from Pune. Yes. So now you can observe how these two questions are different. अब मैंने जब कंचन को क्वेश्चन पूछा, इट इज अ यस एंड नो क्वेश्चन, तो उन्होंने आंसर दिया यस. बट पहला जब मैंने दिव्या को क्वेश्चन पूछा, इट वाज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, इट नीडेड एन एक्सप्लेनेटरी आंसर. ओवर देयर आई कांट से यस और नो. करेक्ट? सो वो हमारे दो अलग क्वेश्चन टाइप्स है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन एंड यस एंड नो क्वेश्चन. यस एंड नो क्वेश्चंस दे ऑलवेज एक्सपेक्ट यस और नो एज एन आंसर. ओके? बट डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो हमेशा एक्सप्लेनेटरी आंसर्स चाहते हैं. That is why they are called open-ended, and that is the why the other one is called close-ended. That's why we have to make sure कि अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछ रहा है yes or no वाला, हम वहाँ पे एक्सप्लेनेटरी आंसर ना दे, एंड कोई अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन पूछ रहा है वहां पर हम गलती से yes or no ना बोल. ठीक है? That becomes very very important. Understood? Okay, लिख लिया. Okay, very good. You guys are fast. Now, next, when we talk about statements with be, over here, first grammar part that we look at is statements with be. Okay, statements with be में हम
बी, वर्ब बी को यूज करके कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे वो देख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल वी से ना, आई एम सुस्मिता, आई एम कंचन, यू आर कंचन. करेक्ट. तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट्स विद बी यूज कर रहे हैं. Okay. Now the verb be, most of the times we don't use it as it is. We change it to is, am, are. हम verb be को is, am, are में change करते हैं and use करते हैं. Okay. तो I के साथ में am आएगा, you के साथ में are आएगा. Only with he, she, it changes. That is your are. For he, she, it is, and then with we use are, and with they again we use are. Even if I refer to one person's name, that is third person singular, I will use is again. Sunny is from South Korea. That is how I'm going to say it. Understood? Okay, write down this table quickly. Done? Done? Okay. Next, of course, the sentence structure that I just told you will start with subject I am, क्योंकि I आ रहा है तो हम इसके साथ में एग्री करेंगे. I am Susmita. Okay, that is how we will say he is from the US. Understood? Next आता है हमारा possessive adjectives. Now possessive adjectives, if you remember, I told you yesterday, we have nouns, then we have pronouns, then we have adjectives. Nouns are the names of people, places, things, and ideas. Correct? Even if I say student, that is a noun. Even if I say Poonam, that is a noun. Correct? Now, same way, we have pronouns. Pronouns are used to replace our nouns. For example, मैं बोल सकती हूँ Poonam is absent. If we know the subject Poonam, I will use the word she. She is absent. Correct? समझा कि नहीं समझा? Yes. Yes. So pronouns are used to replace your nouns. Nouns हम वापस वापस नहीं use कर सकते ना. I can't say Aditya is coming to class. Aditya wakes up at 7 p.m. 7 a.m. not 7 p.m. Aditya wakes up at 7 a.m. Aditya goes to office at 10 a.m. बार बार आदित्य बोलना बोरिंग हो जाता है, राइट? सो एक बार मैंने सब्जेक्ट में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, आदित्य गोज टू ऑफिस एवरी डे. ही वेक्स अप एट 7. ही गोज टू ऑफिस एट 10. तो ही हम यूज करेंगे ना उसके बाद में. सो दोज बिकम आर प्रोनाउंस. ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, ये सारे हमारे प्रोनाउंस हैं. ओके. देन आते हैं हमारे एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स हमें इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन्स एंड प्रोनाउंस के बारे में. मेनली आर सब्जेक्ट. ठीक है. नाउन्स एंड प्रोनाउंस के बारे में वो और ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन देते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई कैन से अभिषेक इज अ स्टूडेंट. Abhishek is a student. At the same time, I can also say Abhishek is an intelligent student. तो intelligent जब मैंने बोल दिया, it gives me more information about what kind of a student Abhishek is. Correct? So वैसे ही words intelligent, beautiful, smart ये सारे हमारे adjectives हो जाते हैं. Pretty, costly, expensive ये सारे हमारे adjectives हो जाते हैं. ओके. नाउ सेकेंड पार्ट वी कम टू पजेसिव्स. अब ये पजेसिव जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. पजेसिव नाउन्स होते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, और फिर पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं.
ठीक है। अभी के लिए हम possessive pronouns नहीं देखेंगे, अदरवाइज हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी के लिए हम सिर्फ देखेंगे possessive nouns and possessive adjectives, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है। Possessive nouns are nothing but whenever we use apostrophe s, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है apostrophe s. Okay. For example, what is the name of our institute? Sushmita's class. Susmita. Susmita's That's classes. Okay. that's Apostrophe s है end में. तो it tells us who it belongs to. वो किसको belong करता है या फिर उसका owner कौन है. Apostrophe tells us that. Correct? So that is your possessive noun. Possessive noun. अभी यहाँ पर टू रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो हमारा एपोस्ट्रोफी एस रहता है ना, इट इज कॉल्ड पजेसिव नाउन्स. उसको हम सिर्फ पजेसिव करने के लिए या फिर कॉन्ट्रैक्शंस करने के लिए यूज करते हैं. वर्ड प्लूरल करने के लिए हम कभी भी एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते. इट इज अ स्पेलिंग रूल, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल बिकॉज मेनी पीपल मेक दिस मिस्टेक. ओके, ये फर्स्ट हो गया. सेकंड, हम एपोस्ट्रोफी एस हमेशा लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं. ओके, दैट मीन्स possessive nouns we always use it for living things. We don't use it for non-living things. For example, I will say this is Divya's book. I cannot say table's leg. Table's leg is incorrect English. I will say leg of the table. समझे? Okay. That is the rule for possessive nouns. Now, coming to possessive adjectives. Possessive adjectives are used to replace possessive nouns. अभी मैं बोल सकती हूँ कि टॉम इज एमीज फ्रेंड. करेक्ट, बट मुझे एमी ये सब्जेक्ट पता है, तो आई विल से टॉम इज हर फ्रेंड. सो हॉट आई विल फ्रेंड. यूज द हर फ्रेंड. ठीक है, सो आई विल यूज द वर्ड्स लाइक माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर. माई मतलब मेरा, मेरा नाम सुस्मिता है, सो आई विल से माई नेम इज सुस्मिता. इज दिस योर बुक, क्या ये आपका बुक है, ये तुम्हारा बुक है. हिज, मेल्स के लिए हम यूज करेंगे, ये उसका बुक है. एंड हर फॉर फीमेल्स, इट्स इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स. आर मतलब अपना, देयर मतलब उनका. ओके. Okay. Yes. Now, only rule that you should remember with possessive adjectives. Again, you're talking about possession and ownership over here. ये चीज किसको belong करती है वो बोलने के लिए हम my, your, his, her use कर रहे हैं. But the main rule that you should remember is कि इनके बाद में हमेशा एक noun चाहिए. इनको हम as it is use नहीं कर सकते. I can't just say this is my. मैं सिर्फ ये नहीं बोल सकती this is my. It's incorrect English. I need to say this is my phone, this is my book, this is my laptop. ठीक है. सेम वे आई कांट से दिस इज योर. आई विल से दिस इज योर बुक, दिस इज योर लैपटॉप. वी नीड अ नाउन आफ्टर इट. समझ गए? Yes. ओके, राइट इट डाउन नाउ क्विकली.
Done? Yes. No. Divya, I thought you got bored. No, no. गलती से लेफ्ट हो गया. Okay, no problem. Done writing? Yes. Okay, very easy. Now, next grammar part that you have is WH questions. Okay, WH questions. Again, I already told you WH questions. We use these questions whenever we want to ask open-ended answers. Correct? So, we start the questions with WH question words. WH question words कौन से रहते हैं हमारे? What, Where, where, who, when, how, Very good. What, where, how, when, who, whom. what, करेक्ट who. ये सारे हमारे WH क्वेश्चन वर्ड्स Yes. रहते हैं आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ ऑल द WH क्वेश्चन वर्ड्स एंड उनके मीनिंग करेक्ट इट्स प्रीटी इजी now whenever you want to make a question in WH questions basically we start with a WH question word then we will use am is are then we will use the subject and then we have the object and the most important one the question mark don't forget the question mark. Okay, whenever you are asking questions. So, where is your friend? Where are you and Louisa from? Is am are का रूल वही रहता है जो हमने पहले देखा. ठीक है? सिंगुलर है तो we will use is. थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो we will use is. प्लूरल है तो we will use are. Understood? yes. Okay, write down the question structure. Done? Okay. Yes. Now the examples. Where is your friend? He is in class. Who is Sanhi? She is my classmate. What is soul like? Now this is a little odd question. Okay. Now what is dash dash like? हम जब भी ये क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज डैश डैश लाइक दिस इज नॉट वेरी इंडियन वे वी यूज इट बट यस दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क यू शुड यूज वेरी ऑफन द क्वेश्चन स्ट्रक्चर व्हाट इज डैश डैश लाइक हम जब भी पूछते हैं तो हम किसी पर्सन का या फिर किसी जगह का नेचर या फिर बिहेवियर पूछ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू व्हाट इज आदित्य लाइक what is Aditya like? So you will say he is very friendly, he is very talkative, he is very curious, right? तो हम उसका नेचर या फिर बिहेवियर कैसा है वो हम बता रहे हैं सो सेम वे इफ आई आस्क यू व्हाट इज गुलबर्गा लाइक अभिषेक को मैं पूछ सकती हूँ व्हाट इज गुलबर्गा लाइक करेक्ट अभिषेक इज इन गुलबर्गा करेंटली करेक्ट अभिषेक Gulbarga is very dirty city, man. Don't ask me about Gulbarga. ऐसे ऐसे मत बोलो बट गुलबर्गा Yes. में हो ना अभी आप तो आई Hmm. कैन आस्क यू व्हाट इज गुलबर्गा लाइक तो आप मुझे उस सिटी के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो Okay. Correct. So that Hmm. is how we can make questions whenever we have dash dash. What is dash dash or what are dash dash like? Same way I can ask you what are your classmates like? ठीक है तो आप वहां पर बता सकते हो कि ओके माय क्लासमेट्स आर वेरी वेरी टॉकेटिव और वेरी वेरी क्वाइट दे आर रियली नाइस ऐसे करके आप आंसर दे सकते हो देन हाउ आर योर क्लासेस दे आर प्रिटी इंटरेस्टिंग अभी क्लासेस है प्लूरल है दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दे How are you? Sorry. Where are you and Louisa from? We are from Brazil. Okay, that is how you can answer WH questions. Understood? Pretty easy. Yes.
Very good. Next, you have next grammar part that you guys have missed. We'll come back to handshake part. Here we have yes and no questions. So read the conversation quickly on your own over here and focus on how the yes and no questions have been framed. Okay. Done? Done. The conversation is pretty easy, right? Now, over here we have yes and no questions. Yes and no questions, they usually start with the helping verbs that we use, which is over here we look at is, am, are. Correct? So they will start with is, am, are, depending on the subject. Other subject hai I, so of course it will start with am. If the subject is he, she, it, then it will start with is. If any other subject is there, then we will start with are. Are you free? Is Beth in the same class? Correct? That is how we will ask questions. So we will start with is, am, are, then we have the subject, then we have the object, and then the question mark. Okay? And the answer will be yes, subject, and for is, am, are. Yes, I am. No, I am not. Yes, she is. No, she is not. That is how the answers will be. Answers are supposed to be very, very short. Now, usually, when the answer is no, you're supposed to give the correct information over there. For example, if I ask, are you Pooja? Are you Pooja? Then you will say, no, I am not. I am Abhishek, I am Kanchan, I am Divya, I am Aditya, according to your information. Correct? So, whenever the answer is no, you're supposed to give the right answer after it. बट फुल स्टॉप लग के फिर उसके बाद में नया सेंटेंस स्टार्ट होगा नो आई एम नॉट ऐसे करके फिर आई एम कंचन ऐसे अंडरस्टूड now the examples are you free you can say yes I am or no I am not is David from Mexico yes he is no he is not is Beth's class in the morning yes it is or no it is not are you and Beth in the same class yes we are or no we are not are your classes interesting yes they are or no they are not वैसे करके उसका आंसर आएगा अंडरस्टूड इजी लिख लिया क्वेश्चन स्ट्रक्चर ओके यूनिट वन में इतना ही मिस किया था ठीक है नाउ लेट्स गो टू यूनिट टू just go through your notes and tell me if you have any questions meanwhile
Unit 2 is called What Do You Do? Unit 2 is called What Do You Do? Okay, go through the conversation quickly. Observe how the sentences have been made. Here we are not using is, am, are. Focus on that also. We are using main verbs directly. Done? Easy conversation? Yes. Yes. Okay. Now, quickly try connecting these sentences, especially Divya, because Divya had missed out. No, others have done this. Divya, just try connecting these sentences. First example has been done for you. A salesperson sells clothes in a department store. Same way, you have to try Right. connecting the rest of the sentences. A chef cooks food in a restaurant. Hmm. Mechanic. Uh, A mechanic, don't miss out on the a part. a mechanic fixes car in a garage. A reporter Fixes cars, writes. cars. Hmm. A reporter writes stories for a newspaper. Hmm. A nurse cares for patients in a hospital. Hmm. Pretty easy, right? Right. Now, if you observe how, again, it's a third person singular, but उसके साथ में हमारे verbs के rules change होते हैं in simple present tense. Here we look at simple present tense. Tenses, how many tenses do we have, Divya? Uh, Present tense, past tense, And and future tense. correct. These are the three main types and उनके four सब types रहते हैं. कंचन जी कौन से सब types रहते हैं बताओ जल्दी. Uh, कंचन जी और अनूप. हाँ, tell okay. me. भूल गए. Mm, like मैं भूल एक तो गई हूँ, मैं सामने गलत आंसर नहीं दे रही. एक तो सामने दिख रहा है ना, एक तो बताओ हाँ, एटलीस्ट. simple present tense, present continuous tense, Mhm. हम्म. Present perfect. and present perfect tense. Yeah. ओके, और एक Thanks, टाइप होता है Abhishek. परफेक्ट कंटिन्यूस Perfect टेंस. continuous. Yes. Yes. ओके, और ये फिर 4 into 3 12 टाइप्स के हमारे टेंसेस रहते हैं. ओके, सिंपल टेंसेस, कंटिन्यूस टेंसेस, परफेक्ट टेंसेस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस. वी हैव 4 सब टाइप्स एंड 3 मेन टाइप्स. मल्टीप्लाई होते हैं, 12 टेंसेस हमारे हो जाते हैं. ओके. So the first one, we start with the easiest one, but the one that we don't use very often. And this is very, very important because in all the upcoming units, we are going to refer to this tense and use our sentences. Okay, while speaking and even while writing or reading. So that is why this tense becomes very, very important for us, which is simple present tense. Okay, now first we'll look at uses. When do we use simple present tense? Before I show this, let's ask Aditya, when do we use simple present tense? When you are doing your work, sorry, there are three rules. When you are means permanent truth, and the second Mm-hmm, habituated, mm-hmm, habituated,
Third one is your daily routine. When you are using daily routine, then you use this types of this sentence is in there. And the fourth one is Scientific facts. yeah, Okay, what? scientific facts. Scientific. Scientific. Whenever we talk about a repeated action or a habitual action, okay, जो चीज हम बार बार डेली करते हैं ना बेसिकली, तो we'll use it to talk about in simple present tense. Simple Okay, present. for example, I will say I go to the institute at 3 p.m. every day. तो मेरा repeated action है ना, habitual action है. As soon as I wake up, I drink coffee. It's my habitual action again. So I will use simple present tense. Simple present tense, observe करो कि ing हम कहीं पर भी use नहीं कर रहे हैं. Okay, as soon as I wake up, I drink coffee. I go to the institute at 3 p.m. every day. Correct? So I'm not using ing anywhere. Same way, whenever we talk about a person's routine, then again we will use simple present tense. At the same time, whenever we talk about permanent truths, the things which do not change. For example, sun rises from the east. क्या हम वो change कर सकते हैं? Mm, Like, this is a permanent truth. Correct? The earth revolves around the sun. The earth revolves around the sun. Can we change that? No. So no. we will talk about it in simple present tense. Understood? These are the uses of simple present tense. You can write it. I'll give you the time to write. I'll first explain the sentence structure. But who is going to explain the sentence structure before that? Before I show you the rules to it? Abhishek, what is the sentence structure for simple present tense? Mm, For simple present tense, sentence structure is Hmm. mm, I, he, Mm-hmm. she, I it, will go. uh, plus subject plus object. Plus, Uh-huh. क्या 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 सब्जेक्ट हाँ प्लस हाँ ऑब्जेक्ट सॉरी कब सॉरी आता है, कब नहीं आता है, कौन सब्जेक्ट सी प्लस सेंटेंस में आता है? रूट फॉर्म सॉरी हाँ. सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म उसके बाद हम्म. यस और यस फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट ओके, याद आया अभिषेक को अभी. ओके, एस या फिर ई एस कब लिखता है कंचन जी? ही शी वर्ब के साथ में. हाँ मैम. एस या फिर ई एस वर्ब के साथ में कब लगता है इन सिंपल प्रेजेंट टेंस? Uh, guess I थर्ड can't पर्सन अभिषेक ने third. आंसर बता दिया था. अभिषेक ने आंसर बता दिया था, हाँ. आप सुन भी लेते तो He, हो जाता. Whenever we have he, she, it as he, a she, it. subject, we use s or es depending on the spelling rule हाँ. with the verb. The way I'll explain again, don't get confused. ठीक है? Aditya, when do we, sorry, tell me the sentence structure for negative. 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 Uh, Subject plus do does plus not plus verb plus object. Okay. When do we use do does? When do we use do does? Do does when you are asking any uh, when you are नहीं giving नहीं, do कब यूज होता well, है और does कब यूज होता है? Like, what is the variation? That's what I'm asking. oh variation. Do use for the first person and second person and the Mm-hmm. third person for the plural and does use only for the third person singular. That is for third person singular. Very good. So we use s or es with the verb in positive statements whenever we have third person singular as our subject. ओके, आई है, यू है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन प्लूरल है. हम वर्ब को एज इट इज यूज करेंगे. आई वर्क इन सो एंड सो कंपनी. राइट, आई वर्क इन सो एंड सो कंपनी. बट अगर मैं थर्ड पर्सन के बारे में बोल रही हूँ, आई विल से आदित्य वर्क्स इन सो एंड सो कंपनी because he is third person and he is singular. Correct? So I will say Aditya works in so and so company.
Aditya takes his tea without sugar, right? So that is how I will say, I will add S or ES depending on the spelling rules that we have. Same way, in negative, I will use doesn't, does not for third person singular. All other subjects will use do. I don't go to office every day. You don't go to office every day. But third person singular, I will say he doesn't go to office every day. Okay. Same way in interrogative, I will start with does or do. Same way, third person rahat, I will use does. All the others will use do as a verb. फिर आएगा subject and फिर आएगा root form of the verb. Root form of the verb कुछ नहीं, verb as it is basically. ठीक है? सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या रहता है वो हम सेवेंथ यूनिट में देखेंगे, अभी उस समय कंफ्यूजन में नहीं जाना है. अभी हमें वर्ब को एज इट इज यूज करना है. ठीक है. एंड देन द ऑब्जेक्ट एंड द क्वेश्चन मार्क. WH question words will start with WH questions. Sorry. WH questions will start with WH question words. Then we have do and does, then the subject and the root form of the verb and the object. Okay. Let's look at some examples now from the book that we have. What do you do? I am a student. I have a part-time job too. Where do you work? I work at Hamburger Heaven. Where do you go to school? I go to the University of Texas. What does Andrea do? She is a guide. She takes people on tours. अभी यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो she takes people on tours. Where does she work? She works at Thomas Cook Travel. How does she like it? She loves it. Understood? Easy? Okay. Write down the rules quickly then. I will just need 10 more minutes. Huh? This last part, bacha prepositions of time, and then we will stop. दिवाली के किसकी किसके प्लान्स है? कितने दिन छुट्टियां होने वाली है आप लोगों की तरफ से? बहुत दिन कंचन जी, बहुत दिन नहीं. One day, ma'am. ऑनलाइन One day अटेंड only. कर रहे हो, ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो, बहुत दिन तो मत बोलो एटलीस्ट. मैम मैंने बोला ना मेरा थोड़ा प्लान है करके, सो वी फैमिली आर गोइंग आउट एक्चुअली. ओके, तो टेल मी द डेट्स. ओके, तो मेरा हाँ हाँ, you had 28. told me. Yes, 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 you had हाँ. told me. Sorry, So मेरे my bad. I had forgotten. Okay. 28 से I'll try to join on 28, 29, 30, 31st, but not sure about 30 and 31. But 30th मेरा 31 छुट्टी है. Don't worry. ओके फिर ठीक है, हाँ, तो मेरा जो 1 से 8 तक 8 तक. ओके, मतलब बाद में आपकी छुट्टियां बहुत है, पहले नहीं है. नहीं दिवाली के बाद से ज्यादा छुट्टी. ठीक है, हाँ. ठीक है. हम्म. ठीक है. I'm asking again because I need to plan the tests also accordingly. सब छुट्टियों के बाद आ जाएंगे, उसके बाद में टेस्ट रहेगी. बिकॉज सब कुछ भूल जाएंगे तो उस वजह से टेस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है. करेक्ट. 8 मतलब दैट्स फ्राइडे. ओके, गॉट इट. मतलब ऑलमोस्ट 1 वीक आपकी छुट्टी हो जाएगी. नो प्रॉब्लम. यस. नो प्रॉब्लम मतलब यू विल हैव टू कवर इट अप. ओके. ऑफ कोर्स आई विल टेक रिवीजन. वी यूजुअली टेक रिवीजंस. हम 4 यूनिट्स का रिवीजन एक साथ में करते हैं यूजुअली. ठीक है, तो डोंट वरी. डन राइटिंग. 1 minute. ओके. Like once you guys are back from holiday, once everyone is back from the holiday, I will take the revision of unit 1 to unit 4 again, okay, if needed. Okay. नहीं तो यूनिट एटलीस्ट 2 एंड 3 का ले लूंगी, कंसिडरिंग यूनिट 1 एंड 2 का मैंने ले लिया है बिफोर द टेस्ट. Tests usually happen in the units of force.
हर 4 यूनिट के Okay. टेस्ट होते हैं हमेशा। ठीक है। टर्न राइटिंग। मैम मेरा एक क्वेश्चन था लाइक कि जैसे आपने मुझे पूछा था लाइक कि एस एंड यस कब यूज करना चाहिए, तो आई कैन गिव द एग्जांपल बट आई कैन नॉट एक्सप्रेस कि वो कैसे कब यूज करता है, वो जो लाइक कि फॉर एग्जांपल जो रूल्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल करेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है, तो मुझे वो ध्यान नहीं रूल्स नहीं रहता है, रूल्स तो नहीं क्या याद करें? रखने की जरूरत है। इफ यू हाँ अंडरस्टैंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, okay, if you can make the हाँ sentences correctly, then you don't need to remember the rules as such, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में यूज होता है करके। You ओके don't need to remember it with, everything, like all the terms that we have, but at least आपको पता है कि ही आ गया तो डज यूज करना है, उतना भी काफी है। हाँ मैं हाँ एक्चुअली मुझे इसलिए मैं बता नहीं पा रही थी वो, क्योंकि नहीं ठीक है। आई वाज लाइक आई वाज एक्सपेक्ट, आप मुझे ऐसा लगा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझे रूल्स बताओ प्रॉपरली। नहीं तो नहीं, एटलीस्ट सेंटेंस का भी एग्जांपल दे दो तो चल जाता वहां पर। दैट इज ठीक द है। रीजन हम ज्यादा निटिग्रिटीज में भी नहीं जाते ना रूल्स के। वैसे रूल्स एक्सप्लेन करने के तो बहुत टर्म्स आ जाते हैं उसमें। ठीक है, बट हाँ आई ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। ओके मैम। ठीक है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट, दैट्स इम्पोर्टेंट। ओके मैम। ओके, दिव्या डन राइटिंग। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट रूल। यू कैन जस्ट राइट डाउन द रूल्स, यू कैन स्किप ऑन द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स आपको नोट्स पे भी मिल जाएंगे वापस। डन। Done. Okay, write down the sentence structures. Again, write just the sentence structures. You can skip on the examples.
Done? Yes. Okay. Interrogative questions. Write it quickly. Tell me once you're done. Done? कंचन जी आपके पास तो लिखा हुआ होना चाहिए ना? नहीं मैम, उस दिन मैंने लिखे नहीं थे. आई यू रिमेम्बर, आई जस्ट टेकन अ स्क्रीनशॉट एक हाँ, दिन. okay. वो फर्स्ट डे था तो मैंने लिखा. Correct, correct. Done. Done? Done. Okay. Next, we have prepositions of time. Prepositions, they help us to relate one part of the sentence to another part of the sentence. ये हमने एक्सरसाइज क्लास में किए थे उस दिन. Okay. Next, we have prepositions of time. Prepositions, they usually help us to relate one part of the sentence to another part of the sentence. Okay. For example, I can say the laptop is on the table. If I just say the laptop and the table, it doesn't make sense. But when I say on, the laptop is on the table, it becomes better. Correct? So, same way we have prepositions of time, prepositions of position, and prepositions of direction. I'm going to the market. So that is my direction. So I'm going to the market. Position, the laptop is on the table. So we are talking about position in relation to another object. Then comes prepositions of time, where we talk about time. So over here, we have the first one, that is at. At is used for exact time. Our class starts at 8 p.m. Correct? So that is the exact time that we are talking about. Okay. Then we have the word in. In is used with parts of days except night. Night के साथ में हम at use करते हैं. I will say it's 9:10 at night. It is 9:10 at night. Okay. But with all the other parts of days, जैसे कि in the morning, in the afternoon, in the evening use होता है. ठीक है? फिर आता है in the month of October in 2009. तो मंथ्स के साथ में भी और ईयर के साथ में भी हम इन यूज करते हैं. ठीक है. देन आता है ऑन. वी यूज ऑन विथ डेज, लाइक ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे. एंड देन आता है ऑन वीकडेज, ऑन वीक नाइट्स, ऑन वीकेंड्स. ठीक है. फिर आता है द वर्ड अराउंड. अराउंड मतलब आसपास. अर्ली मतलब जल्दी. लेट मतलब लेट. अंटिल. Now, until is very important for us. Until मतलब उस time तक. Our class will go on until 9:15. Okay, तो उस time तक. I sleep until 1 o'clock. Or I'm awake until 1 o'clock. Okay, then आता है before. Before मतलब उस time दिए हुए time के पहले. And after मतलब दिए हुए time के बाद.
नाउ मिडनाइट मतलब एग्जैक्ट रात के 12 बजे, एंड नून मतलब एग्जैक्ट दोपहर के 12 बजे। आई नो सम ऑफ यू माइट थिंक इट्स वेरी वेरी इजी, बट कुछ लोगों को नहीं पता रहता है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड? Okay. 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 We have the sentences. I get up at 6 in the morning on weekdays. I go to bed around 10 in the evening on weeknights. I leave work early in the afternoon on weekends. I get home late at night on Fridays. I stay up until midnight on Saturdays. I exercise before noon on Saturdays. I wake up after noon on Sundays. अभी यहाँ पर आप बोलोगे संडे सैटरडेज प्लूरल की यूज किया बिकॉज हम रिपीटेड एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एवरी सैटरडे की बात कर रहे हैं, उस वजह से सैटरडेज बोला गया। ओके, बट एक ही सैटरडे की अगर हम बात करेंगे तो हम सैटरडे बोलेंगे, सैटरडेज नहीं बोलेंगे। ओके, okay. Okay. Write down the rule quickly and then you can leave the class. It's finally weekend for me then. Abhishek and Kanjanji, if you guys are interested in reading books with us and increasing your vocabulary and increasing your improving your English, please join the other group that I had shared yesterday. Okay, ma'am. Sure, Kanjanji. I will see you on Monday. हो गया हमारा, वैसे भी एंड ही कर रहे क्लास। नो प्रॉब्लम, सी यू। Done? Done. Okay. Any confusion, any doubts? No? No, no, ma'am. No. Okay, great that you don't have any confusion. If you have any concern, come a little early on Monday and then I'll clear all your doubts. Okay? Okay. Okay, ma'am. Okay, guys, then we'll stop over here Okay, ma'am. and Good we night. will meet on Monday. Do Yes. revise Divya Sure. everything once more so that you're clear with the concepts. And if anything, just ask me on Monday. Okay? Yes, ma'am. Yeah. Okay. Okay. Okay, Bye. guys. Bye bye. See you Thank you, Monday. everyone. Bye. Thank you.